Between Bihari Srivastava. Many. What kind of a son you are? Many. कैसे लड़के हैं आप? आपकी माँ, आपके भाई सब आप पर डाउट कर रहे हैं आपके पिताजी को किडनैप करने का। आप हमेशा इन्फॉर्मेंट है, हम क्या हम डॉक्यूमेंट दे देंगे हुजूर। ये हमारे नाम से वो 5 कट्ठा जमीन एचक्यू किए थे और उसके बाद से ही ये लोग हम उनसे ये करने लगे कि ये इस बात का डर था कि कहीं और हमारे साथ वो रहते थे और यही necessarily implicate another son. For mother every son is equal. मैं क्या कहें, दोनों तरफ से सोच सकते हैं। बिल अंडर सेक्शन 365 ऑफ द आईपीसी मिलॉर्ड चैप्टर 1/12 मिलॉर्ड एफआईआर मिलॉर्ड पिटिशनर वन इज इन्फॉर्मेंट मिलॉर्ड कि मेरे पिता घर से ये कहकर निकले मैं सिद्धेश्वर पंडित पूजा करने जा रहा हूँ पर वापस नहीं आए। हम उसके बाद हम एफआईआर किए। 51 दिन के बाद मेरे मदर और मेरे 2 भाई पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिए और 13/10 को और 15/10 को 164 में स्टेटमेंट दिए मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हुए और मेरे साला लोग के ऊपर कि यही लोग इनको ये कर दिए हैं। इसके पहले कोई कंप्लेन नहीं किए 13/10 के पहले, जबकि 26/8 को ये ट्रेसलेस हुए थे। और उसके बाद एक्चुअली ये किए हैं मेरे फादर मेरे नाम से पिटिशनर नंबर 1 के नाम से 5 कट्ठा जमीन हम साथ में लिखे हुए हैं। 5 कट्ठा जमीन ये हम ये इसीलिए ये लोग हमसे डिसएग्री थे और रोज उनसे लड़ते रहते थे। For the informant. Mr. Akhori, My lord. between Bihari Srivastava. My lord. What kind of a son you are? My lord. कैसे लड़के हैं आप? आपकी माँ, आपके भाई सब आप पर डाउट कर रहे हैं आपके पिताजी को किडनैप करने का। आप हमेशा लड़ाई 51 दिन के बाद कौन एक्सपेक्ट करेगा इमीडिएटली आफ्टर डायरी हो जो देख लिया जाए, डायरी में कहीं कुछ नहीं है मेरे में। कॉल फॉर द आई एम नॉट इंक्लाइंड इवन टू आस्क फॉर डायरी। You must surrender and take bail, or you must get your father recovered. You don't know how will you do it. अब हुजूर हम खुदे इन्फॉर्मेंट है, हम क्या हम डॉक्यूमेंट दे देंगे हुजूर। ये हमारे नाम से वो 5 कट्ठा जमीन एचक्यू किए थे और उसके बाद से ही ये लोग हम उनसे ये करने लगे कि ये इस बात का डर था कि कहीं और हमारे साथ वो रहते थे और यही कारण है। मैटर इन्वेस्टिगेशन में बोलिए साहब आप, you are one of the brothers. What is the basis of your saying that he has kidnapped your father? ये ऑलरेडी हमसे सेपरेट रहते थे फादर और। तो आपने कैसे इन पर इल्जाम लगाया, किस इंफॉर्मेशन पर, क्या बैकग्राउंड फैक्ट्स हैं? इनको जब पूछा गया तो उसके बाद ये हमसे लड़ाई करने लगे और गांव छोड़ के भाग गए हैं। डायरी में ये सारा फैक्ट आया। यही ग्राउंड है सस्पिशन का। अगर यही ग्राउंड है तो इससे पहले भी इनसे लड़ाई हुई है और उसमें ये मार के उनका पैर तोड़ चुके हैं। ये बात डायरी में आई। 307 लगेगा यही कारण। और उस वक्त एफआईआर हुआ था? नहीं, उस वक्त एफआईआर नहीं, पंचायती हुआ था। ये बात डायरी में आई है। और उसके बाद जब ये निकले हैं, मेरे पिताजी जब गांव से निकले हैं तो ये 4 आदमी उनके पीछे पीछे निकले हैं। ये बात को सारे लोग एडमिट कर रहे हैं। और ये रात में 1 बजे वापस आए हैं। जब उस समय भी इनसे पूछा गया तो नहीं बताए और ये खुद जाके इनिशिएट एफआईआर करते हैं। 22/8 को गायब हुए हैं। उसके बाद से ये लोग कभी पुलिस के सामने कोई कंप्लेन नहीं किए। ये एकाएक 13/10 को किए। जब तक ये नहीं आएंगे डेड बॉडी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। आज तक नहीं रिकवर। सस्पिशन का बेसिस बड़ा आपका गड़बड़ है। ये भाइयों की लड़ाई है। मदर भी बोली है भाई, क्या मदर भी बोली है, खुद मदर बोल रही है। मदर की तो स्टेटमेंट है। मदर भाई तुम तो कहिए तो कहीं किए हैं। एनेक्स 2 उनकी बात को ऐसे जवाब नहीं दें, उन्हें थोड़ी बेल देना है। सॉरी The court is considering your plea. Don't when you are standing on the please have patience. कि स्टेटमेंट का पीछे रीजन नहीं है, बोनाफाइड रीजन नहीं है, लेकिन डायरी आने दिया जाए, देख लिया जाए उसको। वो तो करूंगा ही। I am only contemplating whether I should grant him provisional bail in the meanwhile. See, the father is missing. He is not to be found.
he was the first person because the land, 5 kattas of land to the exclusion of the other sons has been executed in his favor. There could be a reason for you all to implicate him falsely. We don't know. So therefore, even if I ask for diary, would he be entitled to ask for provisional bail? That's the question which I am contemplating. Diary तो मांगूंगा. बात कह रहे हैं कि हमको लिख दिया गया है, वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है. सबमिशंस है केवल इनका कि उसके लिए डिस्प्यूट है. सबमिशन तो आपका भी है ना, एविडेंस तो अच्छा नहीं. You don't have even the knowledge where is your father hiding or kept hidden. वो भी तो नहीं है. You could be right. The mother would not unnecessarily implicate another son. For mother, every son is equal. तो क्या कहें, दोनों तरफ से सोच सकते हैं, देखते हैं डायरी क्या. But let me grant him provisional bail. Heard Mr. Akhoury Bipin Bihari Srivastava for the petitioner. आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए मिस्टर श्रीवास्तव. हर बात को एकदम जवाब देने की जरूरत कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होती है. You need to address the court and not your adversary counsel. वो हड़बड़ी होती है. When somebody is standing there, you have a feeling that maybe because of this opposition, provisional bail would not be granted. But then that doesn't help. You have to maintain that calmness. Heard Mr. Akhoury Bipin Bihari Srivastava, learned advocate for the petitioner, and Mr. Kumar Gautam for the informant. No, Kumar Gautam for one of the brothers, for mother. Informant. अब informant is not informant. Yes. Mother and others. What is your locus here to oppose the bail? Yes. What is the locus here to oppose the bill? Since this was my husband, we'll justify your presence. This is one my and we'll husband. make it a ground for grant of provisional bail. Heard Mr. So and so for the petitioner and Mr. Kumar Gautam for the mother of the petitioner, on whose statement the petitioner has been made accused in this case, even though he is the informant of the subject FIR. The petitioner is said to have lodged a first information report on 26/8/2020, alleging that his father, who had gone out of his house to offer his prayers in a temple at Singheshwar, but he did not come back. Stop. No suspicion was raised against anybody in the FIR. Stop. After about 51 days of such report having been made by the petitioner, the brothers and the mother of the petitioner have approached the investigating agency and have expressed suspicion that perhaps the petitioner may have caused the disappearance of his own father. The reason for suspecting the hand of the petitioner in the aforesaid occurrence is not known, but it has been inferred that since the petitioner always used to fight with his father for alienating family property in his favor, and that in the past he had also assaulted him, and therefore he would have been involved in the kidnapping of his father. Mr. Srivastava, learned advocate for the petitioner, however, submits that such apprehension is such suspicion is absolutely unfounded. In fact, there is every reason for the petitioner to suspect that because his father had earlier bequeathed part of the family property in favor of the petitioner, to the exclusion of the other heirs, including the brothers of the petitioner, that he is being falsely framed in this case.
Mr. Kumar Gautam, learned advocate for the mother of the petitioner, however, submits that for a mother, every son is dear to every son is dear, and without any reason, she would not have suspected the hands of the petitioner in the aforesaid occurrence. There is a past history also of the petitioner fighting with his father and other brothers for property. Be that as it may, learned counsel for the petitioner submits that the accusation is based only on suspicion. It's quite unfortunate that there is no trace. The father of the petitioner has not been traced out even today. Call for the case diary and list this matter on receipt of the same after 4 weeks. Give a date. 28th of March. Calendar. On 31st of March, the petitioner in the meanwhile, in the event of his arrest or surrender, shall be released on provisional bail 10,000.